Okay, so we'll see antioxidants means they are used to prevent the oxidation of your product. So it is very important point. Again यहाँ पे उसका mechanism, concentration ये सब important है. I will explain. So name of compound and the concentration. Name of compound and usual concentration. So first ये हो गया आपका first class. Antioxidants, those which act as a reducing agent. That means what? Antioxidants agent or antioxidants, those themselves act as a reducing agent. Means what will happen in place of, okay, in place of your drug, they will get oxidized. So they are preferentially oxidized in place of your drug. So for example, ascorbic acid, sodium metabisulfite, then sodium bisulfite. So इनकी concentration भी important है. So ascorbic acid, sodium metabisulfite and sodium bisulfite. So they are used in this concentration. Ascorbic acid is used in the 0.0022 to 0.0022.1%. Then sodium metabisulfite 0.1 to 0.15%. Then sodium bisulfite 0.1 to 0.15%. So these drugs, they themselves get oxidized. ये क्या होंगे, ये ऑक्सीडेशन इनका हो जाएगा इन मतलब आपके ड्रग का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ये खुद ही सूली पे चढ़ जाएंगे आपके ड्रग को मरने देने की बजाय. देन सेकंड क्लास इज एंटीऑक्सीडेंट which block. Yeah, I am in a lecture, I will call you back. Antioxidant as blocking agent. Antioxidant as blocking agent. So these are the drug which will block the oxidative chain reaction which in which they are usually not consumed. तो पहले क्लास में क्या होता था कि ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड, उसके बाद में सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वगैरह, तो वो क्या करते थे, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह है वो खुद ही ऑक्सीडाइज होते थे और आपके ड्रग को बचाते थे. खुद ऑक्सीडेशन होगा उनका एंड ड्रग का नहीं होने देंगे, मतलब कुछ भी हो वो बचाएंगे आपके ड्रग. सेकंड क्लास क्या है, सेकंड क्लास और द सेकंड क्लास एंटीऑक्सीडेंट, दे ब्लॉक्स द ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन इन विच दे आर नॉट कंज्यूम्ड. ये ऑक्सीडेशन ब्लॉक कर देंगे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल ascorbic acid esters butylated hydroxytoluene, that is known as a BHT, and tocopherols. मैकेनिज्म याद रखो, क्वेश्चन इसके ऊपर 2-3 बार आ चुका है कि कौन सा किस तरीके से एक्ट होता है. आई थिंक जीपैट 2020 में ही आया था. कॉन्सेंट्रेशन है, देन कॉन्सेंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन थर्ड कैटेगरी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज अ चिलेटिंग एजेंट. सो दे विल form a complex with catalyst responsible for the oxidation reaction. कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिस्पॉन्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर ले, चिलेटिंग एजेंट. सो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड. देन लास्ट क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक्स, दे विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. तो उसमें आता है फॉस्फोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड. सो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कौन किस में आता है वो इंपॉर्टेंट. So ascorbic acid, sodium metabisulfate, bisulfate, they will act as a reducing agent and they themselves get oxidized in place of your drug. In antioxidant as a blocking agent, that means they will block the oxidative chain reaction and they will not normally consumed in the reaction. So as per ascorbic acid esters, BHT, that is butylated hydroxytoluene and tocopherol. Then chelating agent, they will form a complex with the catalyst responsible for the oxidation. Example EDTA. Synergistic means they will increase the effectiveness of antioxidant. So phosphoric acid, tartaric acid, and now we'll see ये हो गया फॉर्मुलेशन. उसके इक्विपमेंट वगैरह कौन से यूज करना है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. you can see from books. Okay. Now quality control test for glass. जैसे आपने बोला है ना, जैसे कंटेनर फॉर पेरेंटरल पर्पस. So what are the different containers used in the parenterals? So glass container are used, plastic container are used. That's it. Glass container, plastic container. Okay. Only two are used, glass and plastic. So glass is very important. इसके regarding पूरा आता ही आता है questions. So you have already seen in the material construction types of glass and all that. Okay. So quality control test for glass, that is for evaluation of chemical resistance of glass. कि आपका ग्लास जो कंटेनर यूज करने वाले हो पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए, so how much it is resistance. So chemical resistance of glass is checked by two tests. The amount of alkaline substances, the amount of alkaline constituent which is released
or which is leached by purified water under the controlled temperature condition. मतलब क्या कि जो ग्लास कंटेनर है आपका, उसमें अगर वाटर यूज कर रहे हैं आप और उसको कोई हीट किया तो ग्लास कितना अल्कली छोड़ेगा उसमें वाटर में, दैट इज नथिंग बट द leaching of chemicals, leaching of alkali from glass surface in the purified water, okay, at a controlled condition. So limitations, they are checked by different tests. There are two tests. Basically, there are two tests for evaluation of your glass content. First one is nothing but the water attack test. Water attack test, and second one is nothing but the powdered glass test. Water attack test and powder glass test. Water attack test किसमें करना है, powder glass test किसके लिए है? So water attack test, they are performed on the whole container. तो वाटर अटैक टेस्ट में क्या है, पूरा का पूरा कंटेनर आपको यूज करना है. जैसे आपके पास कोई वायल है या फिर एम्पुल है तो पूरा का पूरा यूज करना है, उसको कोई ब्रेक नहीं करना है, कुछ नहीं. सो it is only used with container that has been exposed to sulfur dioxide fumes under controlled humidity condition. तो वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है. So water attack test is only applicable for the container which have been exposed for sulfur dioxide fumes under controlled humidity condition. मतलब क्या, treated soda lime glass, treated soda lime glass के लिए water attack test applicable है. Now what is the principle involved in this test? So amount of alkali leached or amount of water leached or amount of alkali leached in the water after subjecting to a high temperature pressure condition. हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है कि ऑटोक्लेविंग करना है, उसको वाटर डालना है उस कंटेनर में, कंटेनर को क्लोज करना है, ऑटोक्लेव करना है, उसके बाद में जो वाटर निकालना है उसको टेस्ट करना है. वी हैव टू टाइट्रेट विथ दैट वाटर with the 0.2 normal. Containers are filled with the 90% of their capacity with the water. The containers are subjected to autoclaving at 121 degrees Celsius for 15 psi pressure for 30 minutes, and after that you have to discard, you have to remove that decant or pour all the content. Take 100 ml of that solution from these containers and titrate against 0.2 normal H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड के अगेंस्ट में उसको टाइट्रेशन करना है, उसका एक लिमिट होता है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट टेस्ट इज द पाउडर ग्लास टेस्ट. A powder glass test, it is performed on the by grinding or by sizing the glass particle. जो कंटेनर है उसको ब्रेक करना है. यहाँ पे कंटेनर जो है आपका, जो भी वाइल्स या फिर एम्पुल्स है उसको ब्रेक करना है, पाउडर करना है उसका, उसके बाद में ये टेस्ट परफॉर्म करना है. That is known as a powdered glass test. So whether the alkali is leached or not in the water after subjecting पाउडर ग्लास टू ए टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. इसमें भी क्या करना है कि जो कंटेनर है उसका पाउडर करना है. यू हैव टू टेक अ 10 ग्राम ऑफ पाउडर ग्लास एंड ऐड 50 ml ऑफ वाटर इन द फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, एंड सब्जेक्ट दैट फॉर द ऑटोक्लेविंग एट दिस 121 15 psi pressure for 30 minutes. Okay, then after that cool under the running tap water and add a 15 ml of purified water in that. Again titrate it against the 0.02 normal ES2SO4. अगेन उसका लिमिट भी आना चाहिए, नॉट मोर देन 0.2 ml ऑफ ES2SO4 रिक्वायर्ड. रिमेंबर अंबर कलर ऑफ ग्लास इज मेड बाय यूजिंग एडिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. इसके ऊपर क्वेश्चन आया, हाउ यू कैन इम्पार्ट अंबर कलर by adding iron oxide. We have seen in the detail regarding this. अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके देख लो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मटेरियल कंस्ट्रक्शन चैप्टर, उसमें पूरा देखा है. ग्रीन कलर कैसे इंपार्ट करना है, येलो कलर कैसे बनाना है, अंबर कलर कैसे बनाना है, सब कुछ दिया. और साइज ऑफ कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर का साइज कितना होता है, 1 ml से लेके कुछ 1000 ml तक. मतलब देखो आप सलाइन का 1 लीटर होता है उसमें, तो 1 ml से लेके 1000 ml तक आपका सिंगल डोज कंटेनर हो सकता है. नाउ मल्टीपल डोज कंटेनर में बी अप टू 30 और 50 ml. ओके, सिंगल डोज कंटेनर the size of container ranges from 1 ml to 1000 ml, and for multiple dose container that is nothing but 30 to 50 ml. Okay, remember. Now next is the types of glass as per USP. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. टाइप्स ऑफ ग्लास एज पर यूएसपी. ठीक है, टाइप है, उसके बाद उसके लिए क्या मतलब, व्हाट इज द टर्म, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लास. ओके, टाइप 1 ग्लास इज देयर,
type 2 glass is there, type 3 is there, and this is type 4. Now what is the term? Then type of test performed for particular glass, then sample size कितना, okay, sample size कितना लेना है और volume कितना लेना है और limit is to सोर का unit, then use क्या है, general use. Okay, so first one is nothing but the highly resistant borosilicate glass. Type first glass is known as a highly resistant borosilicate glass. इसके ऊपर कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं in a various manner. They can either directly ask you question, or they can ask you match the following, or they can ask you identify wrong statement regarding the type 1 glass. So highly resistant borosilicate glass. So test which is applicable, powdered glass test, powder cookie. Now volume of sample container. तो जितने भी sample है आपको उतना volume लेना है, all sample container. So what is the limit of H2 super? Not more than 1 ml. Not more than 1 ml of 0.2 normal H2SO4 is required to neutralize the alkali released by glass. Okay, so this glass is used for buffered and unbuffered aqueous solution, and it is also used for all other use. Now second type of glass is known as a treated soda lime glass. Treated soda lime glass. Second type of glass is a treated soda lime glass. Treated soda lime glass. So for that वाटर अटैक टेस्ट इज एप्लीकेबल. कौन सा टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी इम्पोर्टेंट. सो 100 ml और लेस, 100 कंटेनर और लेस देन दैट. ओके, इफ 100 कंटेनर्स आर देयर सो यू हैव टू टेक 100. लेस कंटेनर्स और लेस, इफ इट इज मोर देन 100, ज़्यादा 100 से ज़्यादा कंटेनर है तो 100 कंटेनर लेना है, तो उससे कम है तो पूरा जितना है उतना लेना है. सो लिमिट क्या है उसका? इफ 100 containers are there or less are there, then 0.7, not more than 0.7 ml, 0.7 ml of 0.2 normal H2SO4 is required to neutralize the as alkali released by. If it is more than 100 container, then in that test 0.2 ml of H2SO4, not more than 0.2 ml of H2SO4 is required to neutralize the alkali released by glass. So it is used for dry powders, storage of dry powders, oil, oleogenous means oily solutions, buffered aqueous solutions having pH 7, less than 7. इसके लिए उसका यूज है. थर्ड टाइप ऑफ ग्लास इज सोडा लाइम ग्लास. सो पाउडर ग्लास टेस्ट इज एप्लीकेबल. You have to take all containers, and what is the limit of 0.2 normal H2SO4, 0.02 normal H2SO4, not more than 8.5. It is used for dry powders and oily solutions. Fifth type of glass is nothing but the type 5, or it is also known as a non-parenteral glass. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है. One of the following glass is used as a, it is known as a non-parenteral glass. Type 5 glass is a non-parenteral glass. Okay, so it is also known as general purpose soda lime glass. General purpose soda lime glass. So powder glass test is applicable for all container you have to use in the whatever is the sample, and not more than 15 ml of 0.02 normal H2SO4 is required to neutralize the alkali released by this glass. So it is used for non-parenteral, okay, formulation, used for making a container for oral tablet, oral solution, suspension, ointment, external liquid preparation. Next one is a rubber closure. Okay, next one is we have already seen each and every single detail regarding rubber closure in the material construction chapter, types of rubber and all that we have seen. So okay, so rubber closures, they are used in the parenteral to seal the opening of cartridge. ओके, जो आप प्रीवियस के सलाइन देखो कैसे होते थे ग्लास के, उसके ऊपर एक रबर का क्लोजर रहता है, रबर क्लोजर. और इवन आजकल जो वायल्स होते हैं उसमें भी एक रबर क्लोजर रहता है. सो दे आर मेड ऑफ आइदर नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर और पॉलीमर. रिमेंबर सल्फर इज यूज्ड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट. ओके, वल्कनाइजिंग एजेंट मींस to promote the polymerization of rubber. Sulfur is used as vulcanizing agent. 2-marketobenzthiazole is used as an accelerator. Zinc is used as an activator. Carbon black or limestone, they are used as a pillar. Particularly carbon black is used as a colorant. Then antioxidant and lubricants are also added in the rubber. We have seen in the detail in the that material construction chapter, pharmaceutical engineering. जाके देख लो. Two general compatibility problems with the rubbers are there. Two general compatibility problems with the rubber closure. First one is a leaching of ingredient.
फ्रॉम रबर कंपाउंड. ओके, फर्स्ट क्या है, लीचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट फ्रॉम रबर कंपाउंड, रबर टू कंपाउंड. मतलब क्या होता है कि जब सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है रबर, तो रबर का कुछ कंटेंट लीच होता है, रिलीज होता है सॉल्यूशन में. एंड देन subsequent reaction with the ingredient of product and removal of ingredient from the product by sorption. तो रबर क्या करता है कि जो प्रोडक्ट के उसमें इंग्रेडिएंट है उसको एडसॉर्ब कर लेता है. these are the some stability problem, compatibility problem. Permeation of vapor that can be transferred through, or vapor transfer through closure. Then rubber closure usually washed with mechanical agitation in the tank with a hot detergent solution like 0.5% sodium pyrophosphate, and then rinse them with injection water for injection before use. क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉशिंग के लिए रबर क्लोजर की. 0.5% 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट. एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस मतलब इंजेक्शन के लिए क्या क्या लगता है आपको. आपको वहाँ पे सिरिंज लगेगा, आपको वहाँ पे नीडल लगेगा, हाइपोडर्मिक नीडल, syringes, plastic irrigation bottles, then large volume parenteral plastic containers, ट्रांसफर सेट मतलब आईवी सेट लगेगा, ट्रांसफर नीडल्स लगेंगे, इंट्राकैट लगेगा. सो ऑल मदर आर द नाइलॉन एंड सिलिकॉन रबर आर यूज्ड फॉर आईवी कैथेटर. इंट्रावेनस कैथेटर जो होता है आईवी आईवी कैथ इंट्राकैट, उसके लिए सिलिकॉन रबर और नाइलॉन रबर आर यूज्ड कैथेटर. ओके, देन स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर द हाइपोडर्मिक नीडल. नीडल कैसे बनता है, स्टेनलेस स्टील से. समटाइम्स aluminum is also used for the making of hub and cannula of needle. नीडल के पार्ट होते हैं हब. प्लास्टिक कंटेनर except slow density polyethylene and polystyrene can be autoclaved, and they have been used, they have been formulated with the low amount of plasticizer like polyethylene and polypropylene. Polyethylene is mostly used as a plaster. Polyethylene plastic has a high melting range, that is 165 degrees, and relative low permeability for gases and bottom plus, and it can withstand with a normal autoclaving temperature. यहाँ पे एक याद रखो कि पॉलीइथिलीन जो है, पॉलीप्रोपिलीन इज मोस्ट ओके, पॉलीइथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन जो है, पॉलीप्रोपिलीन दैट कैन विथस्टैंड विद द ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर. जो प्लास्टिक होता है पॉलीप्रोपिलीन. फ्लेक्सिबल पॉलीइथिलीन कंटेनर दे आर यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप, एंड फ्लेक्सिबल polyvinyl chloride bags are used for intravenous solution. So I think we'll stop here. ये कल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कल देखेंगे.